A very good morning class 3. This is your English language class and today we are going to start chapter 10 verbs. Chapter 10 verbs. So first of all, what are verbs? Verbs are doing words. जो वर्ड्स हमें बताते हैं कि सेंटेंस में या कहीं कुछ वर्क हुआ है, कुछ एक्शन हुआ है, those words are known as verbs. Verbs are action words. Okay? The words which tells us about any action are known as verbs. जिन वर्ड्स के अंदर कुछ एक्शन हुआ होता है उन वर्ड्स को हम verbs बोलते हैं. So first of all, read the sentences given on page number 34. The owl hoots in the night. Hoots means the noise that owl makes. Okay? The owl hoots in the night. Raj plays tennis on Sundays. What did Raj do on Sundays? He plays tennis. Plays is the action word. Here hoots is the action word. Owl क्या करता है? Hoots करता है. Raj क्या करता है? Play करता है. The girl eats lunch with her brother every day. What did girl do? She eats lunch. So these words hoots, plays and eats are the action words, as these words describe the actions in these sentences. ये वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं कि क्या क्या एक्शन हुए? हूट्स, प्लेज एंड ईट्स. सो दीज वर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज वर्ब्स एंड दीज आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स. ओके क्लास. सो व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स. द वर्ड्स इन बोल्ड आर वर्ब्स. द वर्ड्स इन द बोल्ड आर वर्ब्स. Verbs are doing words. Verbs कैसे हैं? Verbs are doing words. Verbs क्या होते हैं? Doing words, action words. जिन words में कुछ work हो रहा होता है, जिसमें कुछ action हो रहा होता है, that words are called verbs. They refer to a particular action and tell us what a person, an animal or a thing does. ये particular action के बारे में बताते हैं. It tells us what a person, an animal or a thing does. बताते हैं कि एक पर्सन या एनिमल या चीज़ या कोई भी थिंग क्या कर रही है. ओके. वर्ब्स कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक जॉइन टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. वर्ब्स जो है दो पार्ट्स, सेंटेंस के दो पार्ट्स को ज्वाइन करने में भी यूज होते हैं. राजन मेक्स सम टी. हियर द एक्शन वर्ड इज मेक्स, सो दिस इज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस. द चिल्ड्रन रीड बुक्स. वॉट आर चिल्ड्रन डूइंग? दे रीड बुक्स. सो हियर रीड इज द action word. It is the doing word. It is the verb. The frog jumps into the pond. The frog jumps into the pond. So here jumps is an action word. यहाँ makes, jump, read ये क्या है? ये तीनों action words हैं. तो ये क्या है? These are the verbs in these sentences. Okay? The words is, are and am are used as verbs. The words is, are, am are also used as the verbs. Okay? The apple is sweet. Here the verb is. इसको हम helping verbs भी बोलते हैं. तो यहाँ कौन सी verb है? is. The girls are happy. So this is the helping verb. I am tired after the walk. So in these sentences is, are, am are used as a verbs. So is, are, am also used as a verbs. They are also used in statements, questions and negative sentences. Verbs को हम किसी statement में भी use कर सकते हैं या फिर हम कोई question ask कर रहे हैं तो उसमें भी हम use कर सकते हैं. और negative sentences में, negative sentences जिसमें not होता है, ठीक है, उसमें भी हम इन verbs को use कर सकते हैं. The clothes are on the chair. This is the statement and in this statement we are using a verb are. The clothes are on the chair. इसमें कौन सा statement है? are. इसमें कौन सा verb है? are. This is a statement and the verb used in this statement is are. The clothes are on the chair. Next one is it hot in the afternoon? Here we are asking the question and in this question we are using a verb is it. Okay? is यहाँ पे क्या है? verb है. Is it hot in the afternoon? तो यहाँ पे is क्या है? verb है. Next is I am not tired after the walk. This is the negative sentence. As I told you, sentence which have not in it
are known as negative sentences. So in this negative sentence, the verb used is am. I am not tired after the walk. So in these sentences, are, is and am are used as a verb. ओके तो वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं, जिसमें कुछ एक्शन किया गया होता है, वो वर्ड्स जो है वर्ब्स होते हैं. और वर्ब्स में हम इस, आर, एम का भी यूज़ करते हैं. ओके क्लास, in the given sentences here, hoots, plays, eats, makes, jumps, read are the verbs, and is, are, am are also used as a verb. Okay, so this is the explanation video of chapter 10 verbs. Now you all have to read this at your home. Okay, so this is all for today, class 3. In the next class we will do the exercises of this lesson 10 verbs. Okay, I hope you all will understood it. Thank you.